Hello students, good morning you to all. आमे माने आमर प्रीवियस वीडियो रे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को कंप्लीट करथिले. सो आमे जेनेटिक्स पार्ट रो सेक्स डिटरमिनेशन सारिले, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी सारिले एवं ए दीटा as per your council exam is concerned ए दीटा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन एवं जोटा भी वर्तमान आम पढ़ा जाऊे सेटा भी अनादर लॉन्ग क्वेश्चन. कौन आम आज टॉपिक रे पढ़ा पिला माने क्रोमोसोमल डिजॉर्डर. क्रोमोसोमल डिजॉर्डर लाइक एमिति तीनोटी डिजॉर्डर आमको दिखाई. गोटे हूँ टर्नर सिंड्रोम, गोटे क्लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम, तुमर गोटे टर्नर्स सिंड्रोम, गोटे है क्लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम, आ गोटे डाउन्स सिंड्रोम. किछि क्रोमोसोमल डिजॉर्डर आमर थाए. एभली तीनोटी क्रोमोसोमल डिजॉर्डर आमको पढ़ा को आमको आम सिलेबस रे कहई एवं ये तीनोटी जाक गोटे लॉन्ग क्वेश्चन. सो कौन ए क्रोमोसोमल डिजॉर्डर आमे तार कॉन्सेप्ट को भल रकम रे बुझिबा पई आमे टिकिए बैकग्राउंड को जिबा आमे एवं तार बैकग्राउंड है आमर जेनेटिक वेरिएशन गोटे अच्छी आमर जो आमे हेरिडिटी आउ वेरिएशन जो पढ़िले गोटे जेनेटिक वेरिएशन अच्छी. से जेनेटिक वेरिएशन आमर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अनुसार गोटे वेरिएशन हो पारे. जेनेटिक वेरिएशन जो थे क्रॉसिंग ओवर भी होची, रैंडम फर्टिलाइजेशन होची, तापाई गोटे वेरिएशन हो पारे. एवं आउ गोटे होची म्यूटेशन. जो म्यूटेशन रो कॉन्सेप्ट रे आमे एई क्रोमोसोमल डिजॉर्डर तीनोटी को पिला माने आसीबा. तेणु आमे तार बैकग्राउंड को टिके जाई आमे तारी माध्यम रे ए तीनोटी डिजॉर्डर को आमे पिला माने पढ़िबा. सो कौन से म्यूटेशन म्यूटेशन ये जो शब्दटी को पिला माने म्यूटेशन या को स्पोर्ट्स कॉल्ड बाय डार्विन. सही म्यूटेशन शब्दटी को डार्विन को भाषा रे स्पोर्ट्स बोली कहा जाइतला एवं म्यूटेशन शब्दटी को प्रथमे आनिले कॉइन्ड बाय ह्यूगो डी व्राइज. ह्यूगो डी व्राइज coined the term mutation and the same term mutation was called by Darwin as sports. So what is that mutation? It is the unpredictable permanent inheritable changes. Unpredictable permanent inheritable changes in the genetic makeup means chromosome and genes. Genetic makeup
of an organism, of an organism. Mutation, it is the unpredictable changes, it is the permanent changes, it is the inheritable changes of an organism. It also occurs sudden. Changes occur in number of chromosome, structure of chromosome, the position of a gene, etc., etc. That is called genetic makeup. What is our genetic makeup? Our genetic makeup is, myself is one individual. That individual consisting of this much of cells, average 10 to the power 14 number of cells. In each cell with me 23 pairs of chromosomes are there. That is also my genetic makeup. That 46 number of chromosome contain 29,000 number of genes, and that 29,000 number of genes contains around 3 billion nucleotide base pair. Pilamane, that is my genetic makeup. That is the genetic makeup of an human being. Jodi eita samastonko pakhre saman, this genetic makeup, then why they all are different from each other? At what stage they differ from each other? They differ from each other in their sequential arrangement of nucleotide base pair. First of all, clear your concept first. आमे समस्ते तो जने जने ह्यूमन बीइंग, 640 crores of individuals आमे माने अच्छे. समस्तों पाखरे किछि संख्यक सेल अच्छी. प्रत्येक सेल रे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अच्छी. से 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम समस्तंकर 29,000 जीन धारण करिछि. से 29,000 रो जीन्स समस्तंक पाखरे 3 बिलियन रो बेस पेयर अच्छी. ताहले समस्ते कहीं समान नुहंती, समस्ते समस्तंक संगरे समान नुहंती. आमे कहिचे no two individuals of a species are alike, not even twins. Then why? Because there is a difference in their sequential arrangement of nucleotide base pair. No same similarity is there even with two individuals. That is the genetic makeup. For that only, this is Rama, Dama, Syama, Hari, etc., etc. So, when that genetic makeup changes, characters also changes, and that is unpredictable changes, that is permanent changes, that is inheritable changes, that is sudden changes. In the genetic makeup, in this genetic makeup, that is called mutation. साधारण कथाटिए पिला माने, तुमको सीता रोल प्ले करिवार अछि. तुम्हें ग्रीन रूम रे जो कॉस्ट्यूम रे स्पेक्टाटर मानकु पाखकु आसिलो, आउ दी तीनिटा दृश्य पर तुमको ही शूर्पणखा रोल प्ले करिवार अछि. सेई कॉस्ट्यूम रे आसिले तुमको स्पेक्टाटर एक्सेप्ट करिवे कि नॉट एट ऑल. किछि अंडा टमाटो मारो केवल खाइबो. तार अर्थ हला पिला माने
जदि आमे केवल किछि फिजिकल मेकअप चेंज करिदेले आमे जदि सीतारू शूर्पणखा हो जाउचे ताहले भाबिनियो आमर जदि जेनेटिक मेकअप आमे चेंज करिदबा ताहले केतेना परिवर्तन होबनी एंड दैट इज कॉल्ड योर म्यूटेशन क्लियर योर concept so what is that mutation what are the types let's see that mutation pila mane mainly of two types one is your chromosomal mutation and second your gene mutation or your point mutation that means chromosome level re jodi kichi changes hela if these changes occur at chromosome level that is called chromosomal mutation and if that changes occur in gene level that is called gene mutation or point mutation again chromosomal mutation two types one is changes in morphology or structural pattern or architectural plan of chromosome changes in its morphology of chromosome changes in structural pattern of chromosome जो स्ट्रक्चरल पैटर्न तार क्रोमोसोम रे जो पैटर्न रे स्ट्रक्चराइज ता धीरे किछि चेंजेस तार जो आर्किटेक्चरल प्लान ता धीरे किछि चेंजेस ताकू कुआ गला पिला माने क्रोमोसोमल aberration and second part changes in number of chromosome changes in number of chromosomes गोटे क्रोमोसोम रो गठन रे परिवर्तन गोटे क्रोमोसोम रो संख्या रे परिवर्तन क्रोमोसोम रो गठन रे परिवर्तन को कहा गला क्रोमोसोमल aberration when changes occur in its morphology when changes occur in its architectural plan when changes occurs in at structural pattern it is called chromosomal aberration but when changes occur in its number it is called genomic mutation clearly pila mane mark karo one is chromosomal aberration another is genomic mutation chromosomal aberration is when changes occur in its morphology when changes occur in its structural pattern in its architectural plan that is chromosomal aberration again it is of two types one is intrachromosomal aberration another is interchromosomal aberration interchromosomal one is
intrachromosomal aberration, another is interchromosomal aberration. Always the prefix inter means what? Intra, within, inter, among. That means within the chromosome changes occur in its morphology, in its architectural plan within the same chromosome, that is called intrachromosomal changes. Again it is of two types: deletion and inversion. Deletion and inversion are of two types. Deletion may be terminal deletion or interstitial deletion. Terminal deletion, interstitial deletion. पढ़िबा हमें आसीबा एटिके. Inversion may be paracentric inversion, and pericentric inversion. Pericentric inversion. आसीबा पिला माने एटिके. One is your paracentric inversion, another is pericentric inversion. And interchromosomal changes means when changes involves within two chromosomes, that is further two types: duplication and translocation. Duplication and translocation. Duplication पिला माने कौन? Duplicate. One part is there, the original part is there, another part added there, and that is called duplicated part. That is again maybe tandem duplication, reverse tandem duplication, and displaced. Tandem duplication, reverse tandem, and displaced duplication. And translocation, simple and shift. So all these, it is called chromosomal aberration. आमे आसीबा पिला माने एटिके. That is not in your syllabus. This is the format. तथापि आमे एटा को आसीबा कहि देबी कोन से गुडा को सब. But as per your council exam is concerned, it is not in your syllabus. Kainki thus in your syllabus only that three chromosomal disorder, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, Down syndrome, आमे आसीने पर्यंत सेठिके आमे आ माध्यम रे सेठिके आसीबा. तमाने सेई तीनोटी सिंड्रोम ए म्यूटेशन रो गोटे पार्ट आमे टोटल टाको आमे पढिले आमे से तीनटा जाको को आउ टिके फोकस करिबा. सो ये पिला माने हला क्रोमोसोमल एबेरेशन. जदि गोटिए क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर रे किछि चेंजेस होछि ताको इंट्राक्रोमोसोमल बोली कहले. When changes involves within the same chromosome, intra, सेटा पुणी दी प्रकार डिलीशन एंड इनवर्सन. एवं बीटा क्रोमोसोम रे जते बेले इन्वॉल्व हैला, द चेंजेस इन्वॉल्व्स इन टू क्रोमोसोम, that is called intrachromosomal. Duplication and translocation are of two types. Next, आम पार्ट को आसो पिला माने genomic mutation. Genomic mutation. What is genomic mutation? When changes occur in the number of chromosome. In the number of chromosome. पिला माने देखो 2n is equal to 46 आमरो. आम क्रोमोसोम कंस्टिट्यूएंट होची 2n is equal to 46. So एथिरे 23 B changes, 69 B changes,
गोटे इंडिविजुअल तार 23 पेयर्स 23 क्रोमोजोम म्यूटेशन दैट इज म्यूटेंट फॉर्म आ गोटे इंडिविजुअल ता पाखरे मन कर 69 क्रोमोजोम ऑल्सो म्यूटेंट फॉर्म पिला माने एटी दीटा टर्म तुमको कहि दउची वाइल्ड एंड म्यूटेंट normally in which form it is available in the nature, that is your wild form. And if any mutation occurs, if any changes occur, that is called mutant form. So these are mutant form. So 23 and 69 also changes from 46, 45, 44, 47, 48, it is also changes. It is also changes. 92 also changes. Normally we are having 23 pairs of chromosome or 46 number of chromosome. But this is one type of changes. It is one type of changes. In this type of changes, what changes occur? Normally we are diploid. In this type of changes, the changes in number of sets of chromosome. Here, the changes in only number of chromosome. एथिरे पिला माने सेट रो संख्या रे परिवर्तन हला. आमो सेट केते ना 2 सेट्स. सेट रो संख्या ता केते ना 23. 2 सेट्स. Here changes occur in the number of sets. Here changes occur only in the number of chromosome. So accordingly it is of 2 types. One is euploidy. Another is aneuploidy. Another is aneuploidy. What is that? Euploidy changes in number of sets of chromosome. Changes in number of sets of chromosome. That is monoploid, polyploid. This is N. But normally आमे माने होचे 2N. Diploid. आमे changes खाली देखुचे. Monoploid, polyploid. Accordingly, more than 2 sets of chromosome. Polyploid, more than 2 sets. 2 sets of chromosome. So polyploid, triploid, tetraploid, pentaploid, 3N, 4N, 5N and so on. 5N. So here changes in number of sets of chromosome. Normally we are having 2 sets of chromosome, that is 46. Here 1 set of chromosome 23. Here 3 set, 4 set, 5 set and 3, 4, 5 more than 2 set, hence called polyploid. Polyploidy or polyploids. Come to this. Aneuploidy. Changes in number of chromosome. Changes in number of chromosome.
here only changes in number of sets, here number of chromosome. So pila mane 46, 41 and 47, any type of changes. So it is again of two type, hyperploidy 2n plus, hypoploidy 2n minus, 2n plus 2n minus, hyperploidy hypoploidy. again पिला माने एटी टिके लिभै दउची, hyperploidy 2n plus, trisomy 2n plus 1, trisomy, double trisomy 2n plus 1, tetrasomy 2n plus 2, 2n plus 1, 2n plus 1 plus 1, 2n plus 2, trisomy, double trisomy, tetrasomy. तामाने पिला माने एठी सेमिति आसिला हाइपर हाइपो. सब बेले पिला माने गोटे क्लू रखिबो, जोठी भी हाइपर हाइपो यूज्ड आज प्रीफिक्स मीन टू अधिक एवं कम. सो हाइपरप्लॉइडी अधिक 2n प्लस, हाइपोप्लॉइडी कम 2n माइनस. सो अगेन इट इज एठी पिला माने कहि दउची हाइपोप्लॉइडी टाको एठी को ऊपर को आणुचे रे, এই হাইপোপ্লয়েডি टू एन माइनस वन मोनोजोमी 2n minus 1 डबल मोनोजोमी एवं 2n minus 2 नुलिजोमी. सो पिला माने आमे जो क्रोमोसोमाल डिसऑर्डर पढ़िबा तीनोटी, से क्रोमोसोमाल डिसऑर्डर एई अनयूप्लॉइडी रे हमर अछि. काहेकि आमे पढ़िबा टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस एक्स, जने 45 टा क्रोमोसोम अछि. सो 45 टा क्रोमोसोम माने 46 रु कम, केतेटा कम ना गोटे, ताले मोनोजोमी एइटा पढ़िबा. आमे क्लिनेफेल्टर पढ़िबा 44 प्लस XXY 47 टा क्रोमोसोम अछि, 46 रु 47 कोन पढ़िला गोटे, आमे ट्रायोजोमी कथा पढ़िबा. ता माने क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम एई कैटेगरी रो, टर्नर सिंड्रोम एई कैटेगरी रो, डाउन सिंड्रोम एई पुणी कैटेगरी रो 45 प्लस XX 45 प्लस X. तेणु आमर जो पिला माने आज पर योर सिलेबस द 3 क्रोमोसोमाल डिसऑर्डर टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, दैट लाइज योर अनयूप्लॉइडी. कहीं कि पिला माने इन केस ऑफ एनिमल्स, mostly in case of animals, this type of changes usually not found. This type of changes mostly found in case of plants, euploidy. But in case of animals and in case of human being, this type of mutation occur, aneuploidy. तेणु आमे ए अनयूप्लॉइडी को धरिकरी नेक्स्ट क्लास रे आमे से आमर तीनोटी क्रोमोसोमाल डिसऑर्डर पिला माने पढ़िबा. सेई तीनोटी क्रोमोसोमाल डिसऑर्डर आमे पढ़िला बेले एठी कहिबा 2n plus 1 कोन,
2n plus 1 पुणी कौन 2n plus 2 कौन 2n minus 1 कौन 2n minus 2 कौन एवं से तीनोटी क्रोमोसोमाल डिसऑर्डर को आमे डिटेल आमे आउ टिके फोकस रखिकरी पढ़िबा बट ए जो टोटल कैटेगरी रो से जो क्रोमोसोमाल डिसऑर्डर तीनटा कैटेगरी दैट कम्स अंडर दिस अनयूप्लॉयडी सो इन आवर नेक्स्ट क्लास we will discuss about that aneuploidy and with all that three chromosomal disorders. So for today this much. Thank you students.